Sumit this side. So as I have promised that I'll be bringing important questions for UGC NET and some other examinations. So I'm here with you with the questions. So पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो डेट आ चुका है। आप सबको पता है एक चीज कि अक्टूबर अक्टूबर इज द टाइम जब आरपीएससी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो हम अभी यूजीसी नेट के साथ, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि यूजीसी नेट के साथ साथ आरपीएससी का हम प्रिपरेशंस कर ले। और यूजीसी नेट, इसका नेट हो गया तो वो जेआरएफ के लिए लड़ रहा है, ठीक है। जेआरएफ हो गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो नया नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आप लोगों का जो स्टाइपेंड है, फेलोशिप है, वो भी बढ़ गया, ठीक है। तो ये तो गया जेआरएफ के बाद, जिसका यूजीसी नेट हो गया। जिसका नेट नहीं हुआ है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, अक्टूबर जो है, एक सेकेंड, अक्टूबर अक्टूबर इज द मंथ जब क्या होने वाला है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर पे होने वाला है आपका यूजीसी नेट। नाउ जिसका इंग्लिश है, जो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए लगभग सिलेबस सेम है फॉर पेपर 2। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप लोगों का क्या है कि आप लोगों का एक थर्ड पेपर होने वाला है। जैसे नेट का होता है पेपर 1, थर्ड पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेगा राजस्थान के पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, और जियोग्राफी रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन 150 मार्क्स जो है, ये 150 क्वेश्चंस रहेगा इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। उसमें भी दो पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, लेकिन 150 मार्क्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का, वो आप लोगों को पता है उसमें 10 टॉपिक्स होता है, लेकिन हम लोगों का फोकस क्या है अभी, पेपर 2। ये टॉकिंग अबाउट पेपर 2 क्योंकि हम पेपर 2 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 एंड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 एंड 2 का, ठीक है। ये सब्जेक्टिव डोमेन पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोगों का 200 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चंस। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो प्रिपरेशन में थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिफरेंस रहता है, लेकिन आपका कंटेंट जो पढ़ने वाला चीज होता है वो सेम है, वो क्वाइट सेम है दोनों में अगर देखा जाए तो दैट इज द रीजन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं आरपीएससी का स्ट्रेटेजी डेफिनेटली डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो सब्जेक्ट पेपर है उसका भी, और जो पेपर 3 है, मतलब राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, उसका क्या, मतलब सीधी बात जीके जो हो गया, ठीक है, उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। एंड डेफिनेटली कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैच इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून, ठीक है। कंबाइंड बैच लॉन्च होगा आरबीएससी और यूजीसी नेट का, जिन जिनका इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो क्वेश्चंस अभी अगर देखा जाए आरपीएससी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए और स्टडी करें इसके एक्सप्लेनेशन को। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, कोलरिज, थॉमस टेक्विंसी। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? आंसर है बी, ठीक है।
अब एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिए कि ये जो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, इट इज बेसिकली अ 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो 1817, ठीक है, इट इज अ 19th century book written by William Hazlitt, who is an English essayist and literary critic. तो बेसिकली जो ये क्रिटिसिज्म है, हाफ ऑफ द क्रिटिसिज्म व्हाट यू कैन सी, ये किस चीज के ऊपर है कि शेक्सपियर एज अ चाइल्ड ऑफ नेचर, डिफिशिएंट इन आर्ट एंड फुल ऑफ फॉल्ट्स. So basically it is a bit negative criticism, but definitely it doesn't only like open up the negativity in that way, rather it shows the childliness and which was important during the time of or the era of Shakespeare. जब हम उस एरा को, एलिजाबेथियन एरा को हम बारीकी से देखेंगे, विल ट्राई टू स्टडी, डेफिनेटली विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट. फिलहाल क्वेश्चंस देखते हैं, जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 2, which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad. अच्छा, एक चीज बताना मैं भूल गया, आज जो क्वेश्चंस, जो 30 क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, all the questions are based on Shakespeare, ठीक है. So which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad, and what was the title of work of this? So सीधी सीधी क्वेश्चन है, टाइटल क्या है? ओके, क्रिटिक और उसका जो वर्क, ये पूछा गया. लियोस टॉलस्टॉय on Shakespeare and drama, George Bernard Shaw in Saturday Review, J.R.R. Tolkien in his letters, Thomas De Quincey in On the Knocking at the Gate. ये बेसिकली आरपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑप्शन है वो थोड़ा ठीक से देखिए, ऑप्शन स्टडी करिए, चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं शेक्सपियरियन वर्क की क्रिटिसिज्म है, ठीक है. तो राइट आंसर है ए, written by Leo Tolstoy. This is the work. It is an essay published as On Shakespeare and Drama in 1906. So Tolstoy called Shakespeare's play trivial and positively bad. Another negative criticism. और क्या क्या? Pernicious. Okay. And what is another thing that he was saying? Dismiss Shakespeare himself as an insignificant inartistic writer who was not only moral but immoral. So this is a very diabolic criticism, okay, moral at the same time and immoral. If you read the tragedy properly, then obviously you can understand why Tolstoy is saying that. And definitely see the reading, what Tolstoy referred as the text, King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth, most of the tragedies. Question number 3. Wilson Knight's The Will on Fire, ये जो टेक्स्ट है, इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन शेक्सपियर्स प्लेस, टी.एस. एलियट पोएट्री, दांतेस द डिवाइन कॉमेडी, क्वेथेस फॉस्ट. अगेन 2020 आरपीएससी का क्वेश्चन है. बेसिकली ये तो आपको पता ही है, आंसर देखकर समझ में आ रहा है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, शेक्सपियर्स टेक्स्ट और द क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर. So George Richard Wilson Knight, that is the complete name. Okay, this is the timeline. Was an English literary critic and academic, basically. And this is the text, you can say, The Wheel of Fire. It is a collection of essays on Shakespeare's play. Okay, so what you can see, this is a very modern text, collection of essays. Okay. He was also an actor and theatrical director. That is not very important, and also an outstanding lecturer. Question number 4. Which commentator calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play? The lines but mean. Abraham Wright, T.S. Eliot, okay, Manet Mack, and John Calvin. Okay. So the right answer is Abraham Wright. Okay. So basically 1630s work, you can say Hamlet was an indifferent play, the lines but mean. That is what he said. The story of death and intrigue of the Danish court wasn't new, as with nearly all of the Shakespeare's play. Hamlet was adapted from other sources. Okay, so definitely you need to know what the other sources are. This is very important.
but what he said and indifferent play the lines but means. So remember this also, क्योंकि क्वेश्चन अभी क्या हो सकता है, 2020 में ये पूछा गया, अभी घुमा के ये पूछ सकता है। बहुत क्लासिकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि दूसरे स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आरपीएससी में इस बार बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है, विच इज अनयूजुअल एंड सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग अगर नेट ना, मतलब आप नेट नहीं हुआ है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि बिना नेट के क्या हो सकता है, लेकिन दे विल गिव यू टाइम अप्रोक्सीमेटली टिल अप्रैल नेक्स्ट ईयर। इस बार अगर आप नेट क्लियर कर जाओ और आरपीएससी का भी हो जाए, ठीक है, इवन अप्रैल के बाद भी वो लोग टाइम देगा, तो शायद लगभग आप लोगों के 2 नेट साइकिल का टाइम है नेट क्लियर करने के लिए। और नेट ही बस चाहिए, इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 55% चाहिए मास्टर्स के लिए, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड इफ यू डू वेल, इफ यू एक्सेल इन द एग्जाम, जो 200 मार्क्स का होता है, 24 का सिर्फ इंटरव्यू है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाओ तो नेट आपका बस हो जाए, in any way you'll be selected. So that is the reason I'm telling you again and again कि it is a golden opportunity. Let us move on to the next question. AC Bradley, you know, a very important Shakespearean critic. AC Bradley's Shakespearean tragedy consists of how many lectures? Okay, so this sort of questions can also be asked. So the correct answer is D. That means 10 lectures. So what is the full name? Andrew Cecil Bradley. That is the complete name, right? And the work is Shakespearean tragedy written in 1904. So the work is basically the early, not I would say the early modern work, but basically a modernist work that is written in the early of 20th century. That consists of 10 lectures basically. Okay. And what he studied? Great tragedies like Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Okay. So let's look at this question. The forest of Arden appears in All's Well That Ends Well, Macbeth, Midsummer Night's Dream, As You Like It. Okay. So the correct answer is D, right? As You Like It. इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी। रिमेंबर प्लीज, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़िए, कभी कभी ऑप्शन लेके भी स्टडी कीजिए, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ अगर जरूरत पड़े, इफ रिक्वायर्ड, जस्ट नोट इट डाउन एंड डू स्टडी इट लिटिल बिट लेटर। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन दैट appears in the famous pastoral comedy As You Like It, okay, written in 1599. Another important information, first published in the first folio uh, फर्स्ट फोलियो शायद 1623, एग्जैक्टली 1623 में पब्लिश हुआ था, और फर्स्ट फोलियो में जो जो ड्रामा आया था उसमें से फर्स्ट है, ठीक है, एज यू लाइक इट। एंड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रिप्रेजेंट्स द कंट्री लाइफ, दैट मीन्स द विलेज लाइफ एंड एन एस्केप from corruptions, while the Duke's Court represents corrupted city life. Okay, in the era particularly that we're talking about, if we study that properly, so we'll understand one thing. 1599 is the time when the European conquest began, and definitely all the populace, they have already shifted to London because the industrial revolution already started taking place. And also another important phenomenon was the private readership. So there was the transmediations of the life, the village life, that seemed to be very peaceful because there was scarcity of people, there was scarcity of corruption that was very much prominent in the city life, because there was social mobility, and wealth was the very important ladder to simply upgrade your social mobility. So that is the reason there was a very, an important conflict, I would say, and sort of a rat race between the emergent class of merchants and the noble class. Okay, and you could see the Duke. The Duke falls into the noble class, so there was a very important conflict to restore the power. And also another challenge that was prevailing that moment was the Black Death, the Great Plague. Okay, which also lasted for years, right?
and obviously which was very much prevalent, which was poignant in the city life. City life में बहुत ज्यादा था क्योंकि plague is an infectious disease, तो city life में there was poor hygiene, no sanitation, तो लोगों के बीच में social distancing हो नहीं पाता था. Mostly the poor, mostly the commoners, right? तो definitely अगर commoners में होगा किसी तरह पे इन्फेक्ट कर भी सकता है, लेकिन दैट वाज द टाइम आल्सो you could say the golden era because of the prosperity of trade, art, literature, and the stability of political power. Who authored the long essay commenting on the poster scene in Macbeth? ठीक है, Richard Steele, Thomas De Quincey, Oliver Goldsmith, and Dover Wilson. Okay, 2020 का question है. The right answer is on the knocking at the gate in Macbeth, जो हम कुछ देर पहले ऑप्शन में भी पढ़े थे. It was written by Thomas De Quincey. De Quincey is a very interesting person, obviously in the 19th century literature, who has influenced an Indian writer, Bankim Chandra Chattopadhyay, in writing of verse. The OPM meter is the text that influenced Bankim Chandra Chattopadhyay. So you can understand the stylistics of De Quincey. But what is important here that it was first published in 1823 edition of the London magazine, and you can see the entire writing is less than 2000 words. बहुत कम होता है 2000 words. अभी अगर assignment में दिया जाए कॉलेज में तो बोलता है कि at least 3000 to 5000. So it has been called Thomas De Quincey's finest single critical piece and one of the most penetrating critical footnotes in our literature. Very important because इतने कम शब्द में लिखा गया है कि important work आप अगर देखोगे एंड फुटनोट्स जब बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश. ओके, in such a grandeur that is the reason it is being mentioned. Commentators are very dismissive of De Quincey's literary criticism in general, make an exception for his essay on Macbeth. But what is important is the segment where he criticized Macbeth. Okay. Question number 8. Who said the hero of Shakespeare's great classical trilogy is Rome? Wilson Knight, Elsie Knight, Toby Wilson, and Edward Twain. Okay, the correct answer is Wilson Knight, who is an English critic and academic, popularly for his interpretations of mythic content in literature he has worked on, and definitely this is the text to remember. ये text please याद रखिए, The Wheel of Fire, a collection of essays on Shakespeare's plays. Okay. Question number 9. To which festival does the title of the play Twelfth Night refer? Epiphany, Whitsun, Lent, and Easter. Okay, so Epiphany is the correct answer. Okay, title of Twelfth Night refers to the 12th night of Christmas, also refer to the eve of Epiphany. Okay, a day that commemorates the visits of the Magi to baby Jesus and is often celebrated with the temporary suspensions of rules and social orders, so you can find perfect anarchy there. So definitely याद रखिए, important information है जहाँ से बहुत important question बन सकता है फिर से. Who of the following was not a predecessor of William Shakespeare? So basically ये हायर असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो आंसर है इसमें एक क्लू है. क्लू मैं बाद में बताऊंगा आपको एक्सप्लेनेशन में, पहले ऑप्शन देख लेते हैं. क्रिस्टोफर मार्लो, ग्रीन, टिलॉज एंड बेन जॉनसन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज थॉमस लॉज. क्लू क्या था? क्लू ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में जो राइटर था, प्ले राइट्स था, they are the predecessors of Shakespeare. And who are the University of Wits or University of Wits? So they are the attendees of then universities in England. उस समय के जो कहीं ना कहीं रॉयल या फिर नोबल फैमिली या फिर मर्चेंट से भी आता है, जिसके पास कहीं ना कहीं एडुकेशन अच्छा था एंड वेल्थ भी था. And those who have either have
either they're belonging, they are already belonging from a very royal class, or they have that impetus to belong to the royal class. मतलब कहीं ना कहीं मन था कि अपने सोशल मोबिलिटी को अपग्रेड करना, ये एक चीज, और कहीं ना कहीं वो रॉयल क्लास से ही आते थे। सोशल मोबिलिटी को अपग्रेड करना उतना इजी नहीं था। You need to have wealth. Now you can ask me, then commoners should have. No. Basically, the merchants, they are not the royal class. That is the reason there was a conflict between the royal class and the merchants. Okay, the new emerging capitalist. But definitely, those capitalists, they used to, even they had the urge to send their children, not children, I would say, the son, because feminine, not feminine education, but the women education, I would say, there was hardly any chance for the women education. That was the patriarchal system, even in the education. You could notice, although the throne belonged to a queen, that was the irony. And definitely, the writers who have attended the university. Okay, so Christopher Marlowe, Robert Greene, Bill Lyle, Thomas Kate, Payne Johnson, they are the writers. Okay, please do remember, they are called the University of Wits, and they are the predecessors. Mostly, they are the predecessors of Shakespeare. Okay, we'll talk about the Elizabethan drama in two segments. Okay, Shakespeare तो अलग से पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन जो those were the predecessors of Shakespeare's. Okay, what kind of drama they have produced, what were the impacts, okay, they could bring onto the society. That is important. Who among the following critics stated about Shakespeare that he was the man who, of all modern and perhaps ancient poets, had the largest and most comprehensive soul? Okay, a long statement, but do remember, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. So Wilson Knight, Edward Durden, Dryden, Dr. Johnson. So Dryden was the person who stated this statement. That is important. But in his text, Essay of Dramatic Poesy, you must have heard of the text. But remember the time, it was written in 1668. Question number 12. Which Shakespearean character has spoken these lines? Okay. कौन सा वो Shakespearean character है? Okay. Who has spoken this line? जिन्होंने ये बात कहा. Life is but a walking shadow. बहुत सुना सुना लग रहा है, like सुनाई. I mean, you have heard this, right? Kind of बहुत common है. लेकिन sometimes we get confused. Life is but a walking shadow, a poor player that starts and frets his hour up on the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. So important question है, the sound and fury, ये टाइटल कौन लिया था और कौन से टेक्स्ट में? तो कौन सा टेक्स्ट तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कौन, आप लोग बताइएगा. ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर एंड हैमलेट. Okay, so the right answer is, it was by Macbeth. It was spoken by the character Macbeth in the play Macbeth. Okay, this is a pivotal speech, very important speech. Life is but a walking shadow. A very philosophical one that moment, and metaphorical too. Okay, Macbeth uses theater imagery to metaphorically compare life to play on stage. So definitely it is a very common phenomenon in Shakespearean drama that he often used to give the hints that you can compare life to the stage. Question number 13. Who has spoken following lines in Shakespeare's Macbeth? He thought, I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth. Does Mara sleep? The innocent sleep. अब ये तो पता चल गया मैकबेथ से, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि ये कौन से ड्रामा से, बट डेफिनेटली हु हैज स्पोकन, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो कैरेक्टर जो बोला था? सो मैकबेथ हिमसेल्फ. ओके, आफ्टर कमिटिंग द मर्डर ऑफ Duncan.
आप अगर पढ़ोगे sleep no more, Macbeth does not sleep. There is one thing you can see, the sort of superciliations of the self. Macbeth is talking about Macbeth himself. Okay, question number 14. Shakespeare's sonnets. Now it is a question on sonnets. Have the following features. Find out correct statements. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता है जो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आ सकता है. Has written 154 sonnets. Okay. Now sonnets from 1 to 126 are addressed to Dark Lady. He dedicated some sonnets to his patron, Earl of Southampton, and the rhyme scheme of his sonnets are generally A B A B C D C D E F E F G G. Rhyme scheme बहुत easy है शेक्सपियर का. ठीक है. So the correct answer is C. That means 1, 3 and 4. Okay, हम एक बार देख लेते हैं. तो 1 में क्या था? 154 sonnets लिखा है. Correct. Okay. 1 to 126 are addressed to Dark Lady. नहीं. Okay. Dedicated some of the sonnets to his patron Earl of Southampton. Correct. Rhyme scheme यही है. ठीक है. So जो इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इनकरेक्ट क्यों है ये देखा जाए तो देखो 1 to 126 was addressed to WH, Mr. WH. 127 to 152 was addressed to Dark Lady, and 153 to 154 are love sonnets, Cupid sonnets, जिसको कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकता है. राइट. क्वेश्चन नंबर 15. The knockabout scenes in Shakespeare's The Taming of the Shrew and the Merry Wives are the example of vulgar comedy, comedy of humors, farce, the science of buffoonery. Okay, that moment there were a few comic traditions obviously going on. कुछ ट्रेडिशंस आपको देखने में मिलेगा उस टाइम पे. ठीक है. नॉट ओनली इन केस ऑफ शेक्सपियरियन राइटिंग बट Shakespeare's The Taming of the Shrew and the Merry Wives of Windsor are basically farce. Okay, ये farce किसको कहते हैं? Farce is a form of satire. When farce को आप कह सकते हो सीधी कॉमिक satire. ठीक है. Among these following pairs, find out incorrect pair of Shakespeare's comedy and their characters. Love's Labour's Lost, Byron and Rosalind. Character बहुत important होता है. Midsummer Night's Dream, okay, Benedict and Beatrice, The Merchant of Venice, Bassanio, Portia, As You Like It, Orlando and Rosalind. देख लेते हैं जल्द से. correct answer है B. Midsummer Night's Dream, Benedict and Beatrice, not the correct pair. ये कहा का है much ado about nothing. Get the important of the main characters you could say. Question number 17 पे आ जाते हैं. The first folio, the first collected edition of Shakespeare play was edited by, okay, Hemingway, Thomas Sackville, Nicholas Woodall, Thomas Norton, Nicholas Woodall Condell and Hemingway and Condell. Okay, pair बनाया गया है. So correct answer है D. Okay, edited by Hemingway and Condell. कब आया था? 1623. पहले ही हम जान चुके हैं. Okay, it is basically comedies, histories and tragedies collections. आप देख सकते हो इसमें. Question number 18 in the first folio. Again, first folio के ऊपर question है. Edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? कौन सा play omit किया गया था? Macbeth, Persiles, A Midsummer Night's Dream, and Titus Andronicus. The correct answer is Persiles. Okay, it was omitted, and that time Shakespeare has written 37 plays and 154 sonnets. Okay. The character Ophelia and Gertrude appear in Shakespeare's play King Lear, Hamlet, Othello and Macbeth. आप सबको पता है. Correct answer. ठीक है, बहुत easy question है. Hamlet is the correct answer. Ophelia and Gertrude. Okay. So basically, it was written between 1599 to 1601. A tragedy. Okay, published in 1603. Now इसमें एक पब्लिकेशंस दिया गया है और उसका एक आप कह सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम
Hamlet, Othello, हुक्म, Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Hamlet 1601 to 2, ये एक के बाद एक लिखा गया. ओथेलो लिखा है, उसके बाद 1604, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606, ओफेलिया गर्टरूथ. राइट. कैरेक्टर कौन है? ठीक है. इन व्हाट रिलेशंस टू हैमलेट, आप बताइएगा. ओफेलिया कौन था और गर्टरूथ कौन था? क्वेश्चन नंबर 20, हु कॉल्ड शेक्सपियर जोहानिस फैक्टरम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है. क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन. करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ग्रीन. ओके. जोहानिस फैक्टरम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब ये है. इन द पैम्फलेट वर्ड्सवर्थ ऑफ राइट, वर्ड्सवर्थ ऑफ वाइट, इसमें लिखा गया है. एंड शेक्सपियर को दिखाया गया है एब्स्ट्रैक्ट क्रो. ठीक है. Question number 21. Who among the following characters Shakespeare has spoken the famous line to be or not to be? ठीक है, इसमें कोई ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया, लेकिन देखो यूकेपीसीएस लेक्चर में दे दिया गया, ठीक है, वो मेंस में. तो ये बेसिकली कौन बोला था? टू बी और नॉट टू बी, हैमलेट. ठीक है. कहाँ पे बोला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्ट 3 सीन 1, हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क. ओके. इन्होंने कहा था okay, to be or not to be. It is the famous line about the confusions, and obviously somehow invokes a very important psychological paradigm that later on Freud has studied in details. The first folio of edition कब आया था? 1623. हम जान चुके हैं already. ठीक है. Who are the editors? वो भी पता है. क्या क्या था? Comedy, histories and tragedies. 36 plays था, क्योंकि एक प्ले क्या किया गया था? omit किया गया था. Which play by Shakespeare describes jealousy as the green-eyed monster? King Lear, Hamlet, Othello, and Macbeth. Jealousy को क्या बोला था? Green-eyed monster. Jealousy को green-eyed monster. That is personification हो गया. ठीक है. देखो, इसमें हम ये भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं literary devices. ओके. जिसके ऊपर हम अलग से करेंगे कुछ ऐसे PYQs and important MCQs. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या हो रहा था? Iago tries to manipulate Othello by suggesting that his wife Desdemona is having an affair. Iago plants the seed of jealousy in Othello's mind by saying, "Oh, beware, my lord, of jealousy. It is the green-eyed monster which does mock the meat it feeds on." Very important line and very important philosophy अगर ध्यान से देखा जाए. ठीक है. द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स 12th नाइट. मैं सब टाइटल जो इम्पोर्टेंट इंग्लिश टेक्स्ट है वो अलग से शेयर करूंगा. ठीक है. उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा. ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, मटेरियल, शॉर्ट ट्रिक्स एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्विजेस आपको उधर मिलेगा. और डेफिनेटली आप लोगों को जो हर एक एग्जाम जैसे RPSC आया है, ठीक है, नेट एग्जामिनेशन से उस रिलेटेड हर एक जो डिटेल नोटिफिकेशन है एंड डेफिनेटली आप लोगों को उस ग्रुप में मिल जाएगा. लेकिन जो खास बात है उस ग्रुप का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, PMCQs, क्विजेस, नोटिफिकेशन, जो खास बात है जो आप लोगों के लिए खास है, आपको पीयर्स मिलेगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ऐसे कॉम्पोजिट प्रिपरेशंस के लिए. The subtitle of Shakespeare's 12th Night. क्या है? As you will, what you will, as you wish, what you wish. Very important. The subtitle क्या है? What you will. Okay. So ये लिखा गया था 1600 में. Original source जरूर ध्यान दीजिएगा. Apollonius and the Scylla. Okay. By Van Reach and his farewell to military professions, written in 1581. Which among the following characters doesn't appear in the play Hamlet? Horatio, Gertrude, Olivia, Ophelia. अभी अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता है कि गर्तुद तो था, Ophelia भी था भाई. Horatio and Olivia में आप लोगों का confusion हो सकता है. तो the correct answer is Olivia, right? Olivia doesn't appear in the play Hamlet. She's a fiction character from Shakespeare 12th Night, right? ओके. कैरेक्टर के बारे में दिया गया है. आप बारीकी से ध्यान से पढ़ लीजिएगा. PDF आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा.
In her essay, What If Shakespeare Had a Sister? Very important essay from feminist point of view, written by a very important feminist critic who is also popular for one thing. क्या है बताइएगा? वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये सब राइटर कौन से मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, चलो. व्हाट वाज इट? ओके, जे मारी जूडिथ एलिजाबेथ. अगर शेक्सपियर की बहन हो तो उसका नाम क्या होता? उसके पर्सपेक्टिव दिखाया गया है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, जूडिथ. ओके, एंड ऑब्वियसली शेक्सपियर जैसे टैलेंटेड बनाया गया था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आ रूम ऑफ वंस ओन पब्लिश्ड इन 1929, इसमें ये बात कहा गया था. Where was Hamlet when he received the news of his father's death? सीधी सीधी आंसर है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जर्मनी में था. ठीक है. Also is a prince of Denmark. The first folio of Shakespeare's work had a poem as a preface. Very important question. आ सकता है. छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था. शेक्सपियर, जॉन हेंजेस, बेन जॉनसन एंड जॉन हॉल, हेनरी कॉर्नेल. 5 ऑप्शन दिया गया है इसमें. द राइट आंसर ई सी, बेन जॉनसन. बेन जॉनसन का पोएम था प्रीफेस में. ठीक है. बेन जॉनसन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फिगर दैट टाइम ऑल्सो. ओके, बेन जॉनसन पोएम, कॉमेडी आप डेफिनेटली देख सकते हो. बेन जॉनसन के ड्रामा बेसिकली. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रोमियो जूलियट, हेनरी 6, पार्ट 1, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लॉस्ट. ओके, the correct answer is Henry VI, the first play. Okay, written in 1591 in collaborations with Christopher Marlowe and Thomas Knox. They are already the important figures. Last question of today. Which of the following plays begin with the lines, if music be the food of life, love play on? The Tempest, 12th Night, As You Like It, and Romeo and Juliet. So the correct answer is 12th Night. Okay. 12th Night of What You Will, that is a subtitle, is a comedy about the cross-dressing. Cross-dressing के ऊपर एक कॉमेडी था और इसमें कहा गया था. तो आज के लिए इतना ही. ठीक है, मैं एक दूसरे वीडियो में आरपीएससी का स्ट्रेटेजी जरूर शेयर करूंगा. तब तक के लिए ठीक है, स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. पसंद आए तो शेयर करना. बाय एंड सी यू सून विद अ न्यू वीडियो.